Hi guys, welcome to my Q&A video. First of all, thank you so much for all your love and support for helping me achieve 5k on YouTube. So let's start with the Q&As. First question is, from so many books you have read, you must have found conflicting and possibly opposite ideologies and perspective. How do you bifurcate from what is more correct for you and what is not? Very good question. So basically मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है जिसमें बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज है, फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी टू स्टोइसिज्म. सो मैं इन चीज़ों को कैसे डील करता हूँ, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं किसी भी चीज़ को सीधा रूल आउट नहीं करता. आई ऑलवेज रिमेन क्यूरियस, बट मैं स्ट्रांगली बिलीव सिर्फ उन्हीं चीज़ों में करता हूँ जो चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत सारी एडवांटेजेस बताई है मेडिटेशन की, फ्रॉम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस टू लॉन्ग लाइफ स्पैन, पर उनमें से मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो आई डोंट बिलीव इन देम स्ट्रांगली, आई कीप माई माइंड ओपन. हो सकता है ये सारी पॉसिबिलिटीज हो, बिकॉज द गुड थिंग अबाउट नॉलेज इज दैट यू कैन नेवर हैव ऑल ऑफ इट. सो दैट इज वाई यू शुड रिमेन क्यूरियस कि हो सकता है दैट इज समथिंग विच यू हैवंट एक्सपीरियंस, बट इट माइट बी ट्रू. बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन थिंग्स विच आई एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस. दैट इज वाई स्टोइसिज्म की जितनी भी फिलोसफीज है मैंने इंप्लीमेंट करी, एक्सपीरियंस करी है. ऐसी मेडिटेशन में मैंने अपने फोकस और अटेंशन स्पैन को बढ़ते हुए देखा है, वो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ. बट आई डोंट रूल आउट एवरीथिंग कि अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इट्स ऑल क्रैप और इट्स ऑल फॉल्स. I remain curious for other things. From your book summaries and book recommendations video, who have introduced library vlog? Now, what are your future plans for this channel? मेरे को लगता है कि इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, गुड क्वालिटी कंटेंट की थोड़ी कमी है, स्पेशली अराउंड बुक्स. तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली इन हिंदी और इंग्लिश, जिससे मैं नॉर्थ इंडियन क्राउड को थोड़ा टारगेट कर सकूं. बिकॉज आई फील इफ अगर आप लिटरेसी चार्ट्स उठा के देखो तो नॉर्थ इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट लिटरेट पार्ट ऑफ इंडिया, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटिक्स. एंड इंडियन पॉलिटिक्स से इंडिया की डेवलपमेंट डिपेंड होती है. तो अगर मैं थोड़े बहुत चेंजेस भी नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में ला सकता हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल, through sharing things which I learned from book and life, I'll feel very good that I'm contributing towards development of India. And उसके बाद मैंने लाइब्रेरीज का भी आइडिया शेयर किया हुआ है कि मैं फ्यूचर में जाके अपनी खुद की लाइब्रेरीज बनाना चाहता हूँ. एंड उसके लिए ये यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज ये मेरे को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में हेल्प करेंगे इन द मार्केट, सो दैट आई कैन गो टू द इन्वेस्टर्स एंड आई कैन शो देम दैट आई हैव ऑलरेडी डन द फाउंडेशन, आई ऑलरेडी हैव द ऑडियंस, आई ऑलरेडी हैव द पीपल हु वांट दो स्टडी स्पेसेस. एंड उसके अराउंड फिर मैं बिजनेस प्लान बना सकता हूँ, इन्वेस्टर्स ला सकता हूँ, एंड आई कैन ब्रिंग माई आइडिया टू लाइफ. आई नो दिस इज हार्ड, बट इवन देन, व्हाट इज योर फेवरेट बुक इन स्पिरिचुअलिटी? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से कर्मा बाय सदगुरु, very eye opening book. And biography, I would say Peter Diamandis की biography, How to Make a Spaceship. Fiction book, I would say Dan Brown की Da Vinci Code. It was an eye-opening book for me, especially when it comes to religious philosophy and how religion is actually made to control people by the ancient people. So very good book. Philosophy, Letters from Seneca. Amazing book, Letters from Seneca. Business book, I would say Build to Sell. Build to Sell was such a good book, such a thin and easy to read book, but it shows you how a successful business is made and run and is automated. So वो book सब कुछ cover करती है. Self-help book, I would say Courage to be Disliked. Courage to be Disliked was a very powerful book, and it completely changed my perspective about how to see society and how to see myself in the society. Fitness book Can't Hurt Me. I know it's not a fitness book, but उस book ने मुझे बहुत motivate किया है to work more towards my physical health, and especially मेरे अंदर जो negative beliefs थे कि मैं push-ups नहीं कर सकता, या मैं अब ज़्यादा pull-ups नहीं कर सकता, या मैं ज़्यादा running नहीं कर सकता, वो सारे beliefs को उस book ने तोड़ के रख दिया. You can see behind me एक और book मैंने लिया है, अल्ट्रा. तो दैट इज माई नेक्स्ट बुक. इसमें एक मिड 40s का there's a man who is in his mid 40s and he tells his journey कि कैसे वो ओवरकम करता है इन सारे नेगेटिव बिलीव्स को, and he gets into the best shape of his life in his mid 40s. Imagine that. Next question है, what is my profession and how did I get an opportunity to go abroad? Okay, so basically I'm a robotics engineer by profession and I work in the aerospace industry.
एंड मेरे को बाहर जाने का मौका मिला व्हेन आई टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ एंड आई डिसाइडेड टू गो एंड स्टडी अब्रॉड. सो बेसिकली आई वांटेड टू डू रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इन इंडिया इटसेल्फ, पर इंडिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं थे जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करा सके. एंड मैंने कुछ अपने सीनियर्स से भी बात करी थी जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे थे, एंड दे टोल्ड मी दैट रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इज वेरी बैड इन इंडिया. तो इस वजह से मैंने रिस्क लिया टू गो अब्रॉड, and my dad ended up spending all his savings on me, and it was like investment which was worth it because that investment has paid us in abundance of money, abundance of knowledge, abundance of experience. So it was a very good investment and a very good risk. I just want some lessons or books on entrepreneurships. So basically I've already made a video on best business books. So those business books apply to entrepreneurs as well. And biggest lesson which I've learned from my entrepreneurship journey is that try to solve a problem and try to solve a problem of a community you belong to. For example, मैंने अपना कोडिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं ऑलरेडी प्रोग्रामर था, तो मैंने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम ढूंढी कि यहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो आई स्टार्टेड माई ओन टीचिंग बिजनेस. तो मैंने कोडिंग पढ़ानी शुरू करी एंड दैट बिजनेस टुक ऑफ एंड इट वाज वेरी गुड. एंड वन थिंग यू लव और लाइक अबाउट इंडिया, वन थिंग दैट आई लव अबाउट इंडिया इज दैट इंडियाज पॉपुलेशन इज इट्स स्ट्रेंथ. कि वहाँ पे आप कोई भी बिजनेस करो वो चलेगा ही चलेगा as long as you are targeting the right audience, because there are so many consumers and customers, so it has so much huge potential. India can be a serious competitor for China if our politicians leave greed behind and look towards the development of India. How many books you read in a month? I try to finish 3 to 4 books in a month, but अभी जब से मैं इंडिया गया था तो मेरी रीडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत गिर गई थी बिकॉज अचानक से बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी. बट आई एम गेटिंग बैक अप टू स्पीड नाउ, सो आई एम एटलीस्ट 3 to 4 books I try to finish every month. Please suggest best books for teaching professionals. See, I think teaching is one of the most important jobs in the world क्योंकि आप future leaders, future employees को तैयार कर रहे हो through the education system. So I would recommend for teachers to read all the books by Simon Sinek and Bren Brown. तो बेसिकली इन बुक से जो भी आप सीखोगे, अगर वो चीज़ें आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाए थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स, यू विल बी डूइंग वंडर टू द कंट्री एंड यू विल बी डूइंग अ वेरी गुड वर्क फॉर द एजुकेशन सिस्टम एज वेल. बिकॉज साइमन सिनेक और ब्रेन ब्राउन इतनी अच्छी एथिकल चीज़ें बताते हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती एंड विच एवरी चाइल्ड शुड नो बिफोर स्टेपिंग इन टू द रियल वर्ल्ड, सच एज मॉरल एथिक्स, सच एज फाइंडिंग योर वाई, कि तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, एंड मनी शुडंट बी द आंसर बिहाइंड दैट वाई. सो teachers can play a very important role when it comes to conditioning those kids towards those good ethics, good moral values in their school time. How did you get into spirituality? How you plan your day, like your to-do lists and all? Also, do you use Pomodoro techniques? So basically I'm not completely into spirituality. स्पिरिचुअलिटी को लेकर मेरा ये सिंपल थॉट है कि या तो तुम completely spiritual हो सकते हो. अगर तुम completely spiritual path में जाते हो then you need to give up social responsibilities. बट अगर तुम एक बार social responsibilities ले चुके हो तो फिर then you can't take the complete spiritual path. Then spirituality just becomes a tool in your life to keep you mentally stable, to keep you healthy, so that you can fulfill those responsibilities अच्छे से. तो भागवत गीता में भी लिखा है संन्यास योग यानी कि सब कुछ वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़ के you become a monk and you go to a proper spiritual path. But if most of the people can't do it, I can't do it. So if you can't do it, then spirituality is just a tool. Don't get into it too seriously. Use it as a tool in your life to keep yourself emotionally stable, to keep yourself calm, and to fulfill your social responsibilities more efficiently. How do I plan my to-do list? I just have a simple notes app on my phone and I just make to-do list on my phone, and जो मेरे पीछे white board है, I have a habit tracker on that. So जो habits होती है वो permanent होती है, तो इस वजह से वो कभी change नहीं होती. उनको बस मैं track करता हूँ कि क्या मैं रोज follow कर रहा हूँ या नहीं. पर जो to-do list होती है, for example go and buy bread, go and क्लीन योर किचन, ये चेंज होती रहती है हर दिन. तो उसके लिए मैं फोन यूज करता हूँ जस्ट टू मेक अ सिंपल टू डू लिस्ट कि आज क्या क्या करना है. व्हाट आर द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक फॉर बिगिनर्स like me? Please tell. I would say start with fiction self-help books like
The Alchemist will be a very very good book for teenagers, for kids who are getting into their teenage. So it'll take you on that path of, you know, spirituality, self-development. I'll show you there's more to life than just money. How did you develop the habit of reading? Also, if you find too many new words in a book, how do you manage to complete it? इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू रीड डिफिकल्ट बुक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार फेस किया है लोगों से कि डिफिकल्ट बुक्स, डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे करें. इसमें मैं आपको समराइज कर देता हूँ. तो मैं कैसे करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई नो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट बुक, तो उस बुक की मैं पहले ही समरी देख लेता हूँ यूट्यूब पे और सिनॉप्सिस पढ़ लेता हूँ, सो दैट आई हैव अ जनरल आइडिया कि ये बुक किस बारे में बात करेगी. तो मेरे को बिगर पिक्चर पता चल जाती है. उसके बाद जब मैं बुक रीड करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक वर्ड पे आके अटक नहीं जाता हूँ, मैं उस वर्ड के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखता हूँ. तो पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या मुझे सेंटेंस समझ आ रहा है. अगर मुझे सेंटेंस समझ आ रहा है तो वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपने आप फिट इन हो जाता है. अगर मुझे सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या है मुझे पैराग्राफ समझ आ रहा है. अगर पैराग्राफ समझ आ रहा है तो फिर वो सेंटेंस और इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपने आप उस पैराग्राफ में फिट हो जाता है. यू नो, इस टॉपिक को मैं अभी 30 seconds में समराइज नहीं कर सकता. I'll make a proper video on it and I'm sure it'll be worth your time. Your top 5 favorite podcasts that you recommend. My top 5 favorite podcasts are School of Greatness, Daily Stoic, Tim Ferriss Show, and On Purpose, and Philosophize This. These 5 podcasts keep my mind open. They teach me about everything from Bitcoin to self-help to self-improvement to everything. Books to develop structural thinking. Okay, Thinking Fast and Slow, very good book. उसमें तुम्हें पता चलेगा कि how your thinking is getting influenced and how you can take control of it. Second book I would say How Will You Measure Your Life, very good book. It shows how to think about life from a very corporate perspective, but it's so nicely written that it gives you corporate examples as well as real examples and how to use those examples in your life. How can an Indian student afford to study abroad with 100% scholarship, and if possible then also answer what are the expenses to study abroad. Okay, so 100% scholarship का simple तरीका ये है कि pick up one subject in your school and become excellent in it. उसमें 100 out of 100 लाओ, बिकॉज सब सब्जेक्ट्स में अच्छे होने से ज्यादा बेटर है एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होना. एंड वो एक सब्जेक्ट ही आपको बाहर स्कॉलरशिप दिलवाएगा, वो एक सब्जेक्ट ही आपका एक्सेप्शनल एटीट्यूड दिखाएगा. एंड प्लस डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनजीओ में पार्टिसिपेट करो, स्टार्टअप्स के लिए काम करो ड्यूरिंग योर स्कूल डेज और योर कॉलेज डेज. तो उससे आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होगा. चाहे मैकडोनल्ड्स में जाके काम करो, बाहर इस चीज को बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपने मैकडोनल्ड्स में काम किया व्हाइल यू वर स्टडीइंग. इसमें टाइम मैनेजमेंट दिखता है, लीडरशिप स्किल्स दिखते हैं, बहुत सारे स्किल्स दिखते हैं. तो आई वुड से कि बिकम वेरी वेरी गुड इन वन सब्जेक्ट एंड ट्राई टू बिल्ड योर सीवी अराउंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बाय गोइंग इनटू द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूटिंग इन वन वे और द अदर. And expenses to study abroad, if you don't have a scholarship, it can be very expensive. It was a little expensive for me, and at one point I was planning to go back to India and stop my studies here because हम afford नहीं कर पा रहे थे. But then my mom pushed me. We took some loans and उन loans को मैंने pay off कर दिया when I got a job. So it was, as I said before, it was a worthwhile risk and an investment for us. If you were asked to suggest only one book to read, which one that would be? अगर एक ही बुक पढ़नी है तो आई वुड से रीड सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी, बिकॉज वो बुक आपका कंप्लीटली माइंड ओपन कर देगी अबाउट हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड, हाउ ह्यूमंस वर्क टुगेदर एंड अब ह्यूमंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट एवरी ह्यूमन शुड हैव. इस बुक पे तो बल्कि मूवी बननी चाहिए. आई होप हॉलीवुड या बॉलीवुड में कोई ऐसी बुक्स पे मूवी बनाना शुरू करे. इट बी ब्रिलियंट. सो दैट वुड बी वन बुक आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड. सो थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. आई होप आपको मेरे आंसर्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. एंड आई नो ये सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी. मैं इसका भी बुक शेल्फ टूर करूंगा एंड मेनी people are asking me for a bookshelf tour as well, so I'll be doing a bookshelf tour within 1 month, so definitely watch out for it. So I'll see you guys in my next video. Till then, happy reading.